attitude of a line. The attitude of a line, it is defined by two terms, that is pitch and plunge. Pitch and plunge. Suppose inclined bed अच्छी तो बेड ऊपर जदि कौन सी लीनियर फीचर्स अच्छी बा लीनियर स्ट्रक्चर अच्छी सपोज कि एटा गोटे लीनियर स्ट्रक्चर अच्छी दिस इज a linear structure on the bed. So any linear structure, it is defined by pitch and plunge. So the angle between the strike line, our strike line can it also inclined bed, our strike line which is horizontal mid course, so this is the strike line, and angle between the strike line and the line on the bed. तो बेड रे जो लाइन टा अछि ताको भितर जो एंगल आछिबो ताको हमें कहबा pitch. So the angle between a line on the bed with the strike line measured on the plane. से plane ऊपर मेजर करबो से inclined plane ऊपर मेजर करबो. Suppose this is a कि तुमरा inclined plane रहला तो inclined plane रा हमें कोन करछन कि कौन सी लीनियर स्ट्रक्चर तार प्रेजेंट अछि बा बेड ऊपर जदि लीनियर स्ट्रक्चर प्रेजेंट अछि तो द लीनियर स्ट्रक्चर रा एंगल टा with the strike line. Suppose this is the linear structure. That is the linear structure also. So any linear sorry, it a plane also. Any linear structure on the plane, तो कौन सी भी linear structure और plane में रहे, है ना? Now suppose we will take this example to take pitch. जोड़ा हम बोलते हैं. Suppose this is a line. इतना और कौन सी line अच्छी. इतना और line अच्छी bed ऊपर. तो ये जितनी एंगल मेजर कला दैट इज होची पिच कि तुम एठी गोटे से प्लेन ऊपर गोटे लाइन अछि ये इतनी एंगल मेजर कला दैट इज होची पिच एंड एटा होतला हमें ए लाइन टा जेतला हमें हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्ट कलो ऊपर एठी तो ये जितनी एंगल मेजर कला दैट इज होची प्लंज है तो देखो बोल प्लंज कहया गले सिंपली इट इज द इंक्लिनेशन ऑफ ए लाइन. The line ro inclination is plunge, है ना? Our line ro angle with the strike line of the bed, it is ruchi pitch. So plunge ruchi, it is the inclination of the line from an imaginary horizontal line measured on a vertical plane. Vertical plane को एक बोलती है, हमारा vertical plane एला measure करा होती. Then pitch, तो pitch बता को otherwise में rake कोई परिवो, हाँ pitch और rake को आ जाए. So pitch और rake is angle between a line and imaginary horizontal line, both lying on the same plane. So imaginary horizontal line होता है हमारा strike line का मैं कहते हैं, these are strike lines. This strike line है वो this is also a strike line. तो ताको भीतर जितनी के angle रहेगा ताको कौन बोलते हैं? That is called as pitch. So that is measured on the plane. So that's how we define the attitude of a line. The plunge pitch रे भी amount अच्छी, plunge रे भी amount अच्छी, है ना? तुम्हें pitch जो line रे pitch करीबन से line को certain direction रे है, है ना? थोड़ा plunge रे बहुत amount of direction अच्छी. तुम्हें pitch को खाली angle through रे define कर पारियो, but plunge में तुमको direction and angle भी down देगी define करो. ये direction है इतनी plunge अच्छी, ये line रे इतनी plunge अच्छी. Plunge माने कौन? Inclination. Fold. What is fold? So fold हम कोई परिवार? It is can say bending of rock by compression. Bending of rock strata by compression. So bending of rock strata by compression हमें कहले fold. तो जदि गोटे strata हम पाखरे अछि तो हमें ताको compressional force दबा
ताले से एमती बेंड ହେଇଛି तो हम एटा कहंती फोल्ड तो फोल्ड रे जेतु भाई जो स्ट्रक्चर रे जेतु कंप्रेशन ने थिंग ता बेंड हे जाउछ तो इट इज परमानेंटली बेंडेड so permanently बेंड होउछ बियॉन्ड इट्स इलास्टिक लिमिट बेंड होउछ so this type of structure that only produce in a plastic type of rock जो rock का plastic nature अछि बट डक्टाइल हमरो जियोलॉजी के इसके प्लास्टिक और डक्टाइल माने सिमिलर टर्म से यूज करा जाए बट इट डिफरेंट में बोथ केस पाइबा फोल्ड इज a ductile deformation or it is a plastic deformation actually it is a plastic deformation जो कि तुम्हारे तो कौनसी थिंग को बेंड करंती ते परमानेंटली बेंड ही रह जाए है ना भांगेनी आफ्टर इलास्टिक लिमिट जो भांगी जाउ तो ताले सेटा ब्रेटेड जो जिंस ब्रेक करबा से होछ ना ब्रेटेड आफ्टर इलास्टिक इमर कोन इलास्टिक लिमिट पर बेंड होछ तो फोल्ड इज a प्लास्टिक डिफॉर्मेशन कहि पारा प्लास्टिक डिफॉर्मेशन बाद में कहि पारा वो प्लास्टिक होची प्रॉपर टर्म था ना हम जियोलॉजी में मिक्स सब यूज करो प्लास्टिक डक्टाइल डिफॉर्मेशन तो कहि तो जेतुटा बेंड ही रह जाय so it is a simple definition of fold so there are some requirement for folding जोटा कि हमें causes of folding बाद मोर genetic classification पढ़िबा फर्स्ट हम देखियो व्हाट आर द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ ए फोल्ड so this is a fold this is a simple fold it is like this the rate will depend on पूरी एमती कंटिन्यू कर है दिस लाइक हम एमती देखछो वेव पड़ा है सो फोल्ड रे मोर बेंड टा कौन है बेंड हे जाय सो तो जो बेंडिंग थाए तार ओटा कर्वेचर बाहर सो द कर्वेचर जो पॉइंट रे हाईएस्ट थाए ताको हम कहंती हिंज लाइन कौन हिंज लाइन तो बेड फोल्ड रे बेड एमती पूरा स्ट्रेट ला तापर एमती बेंड हला जो जगह हाईएस्ट बेंडिंग थाए से जगह कोन कोन ताको कहंती हिंज लाइन कौन हिंज लाइन तो हिंज लाइन इज द कौन मैक्सिमम कर्वेचर ऑफ द फोल्ड सरफेस है ना सो तुम फास्ट लिख परिबो हिंज लाइन line of you can say maximum curvature on fold surface so एमती तुम्हारा फोल्ड टा बेंड हे ए जगह मैक्सिमम बेंड हे छि फोल्ड ता पर पुनी डिक्रीज करिवो ए पॉइंट रे कोन हो जति कि तुम्हारा बेंडिंग टा जो डायरेक्शन ये बेंडिंग होची एमिति बेंडिंग होतला ए जगह एमिति बेंडिंग तो एमिति जाउतला पुनी चेंज हो सेंस ऑफ कर्वेचर तक कोनते कोन कोन सेंस ऑफ कर्वेचर तो ए पॉइंट रे तोर मैक्सिमम कर्वेचर हेले ए पॉइंट रे कर्वेचर ता चेंज हुए एंड दिस पॉइंट द कर्वेचर इज 0 ए पॉइंट रे कोन कर्वेचर 0 थे सो अलोंग दिस लाइन तुम्हें कर्वेचर कोन पाइबो 0 पाइबो अलोंग दिस लाइन कर्वेचर तुम्हें मैक्सिमम पाइबो Similarly, along this line तुम्हें कर्वेचर 0 पाइबो सो ताको हम कहंती इन्फ्लेक्शन लाइन को इन्फ्लेक्शन देखिए लाइन ऑफ 0 कर्वेचर on fold surface so एटी तुम्हें पाइबा 0 कर्वेचर in between two consecutive inflection line है ना in between two consecutive inflection line you call it as a fold domain now what a single fold तो single fold पूछा ताले ए पॉइंट टू ए पॉइंट एटा गोटे इन्फ्लेक्शन पॉइंट एटा गोटे इन्फ्लेक्शन पॉइंट ऊपर गोटे हिंज पॉइंट इट कंसिस्ट ऑफ सिंगल फोल्ड एटा कोन गोटे सिंगल ऑफ फोल्ड एटा को हम कहते सीरीज ऑफ फोल्ड एटी कोन होची सीरीज ऑफ फोल्ड होची गोटे सिंगल फोल्ड होले द रीजन बिटवीन टू consecutive inflection point
दुटा कंसेक्यूटिव इन्फ्लेक्शन पॉइंट और इन्फ्लेक्शन लाइन भितर जहाँ रहिबो सेटा को हम कौन फोल्ड डोमेन कौन फोल्ड डोमेन देखो फोल्ड डोमेन होची द एरिया बिटवीन टू consecutive inflection line. The area between two consecutive inflection line. So the portion between the hinge line and inflection line. The portion between hinge line and inflection line. So ये जो portion रहेगा, this is called as a fold limb. तब fold limb. So fold limb होची, it is the portion between the hinge line and inflection line. That is called as a fold limb. तमें यदि इटी फोल्ड रो हम एटा हो कंप्लीट फोल्ड होता है तार क्रॉस सेक्शन नियंत क्रॉस सेक्शन माने केमती हम गोटे फोल्ड अछि एवा एटा तार हिंज लाइन ठीक अछि ताको परपेंडिकुलर करी कट करी हला जब एटा एमती कट करबा ताले विल फाइंड दिस एटा हो एमती पाइबो हला एटा जदि हम कट करबा एवा देन विल गेट लाइन लाइक दिस हला ताको क्रॉस सेक्शन फोल्ड कर तमे तो नॉर्मली फोल्ड ड्रॉ करछे एवा ड्रॉ करियो हला तो ये जो पार्ट में हिंज लाइन को जो इन्फ्लेक्शन लाइन को इट तमे हिंज पॉइंट इन्फ्लेक्शन पॉइंट तो तमे क्रॉस सेक्शन लो तो हिंज पॉइंट इन्फ्लेक्शन पॉइंट so this is your hinge line inflection point or hinge point in case of cross section you say hinge point in case of whole fold you will use inflection line or hinge line. Then another you crest point and draw point. So this is the highest point of the fold. So the highest amplitude जो जगह को सेटा होछ कोन crest point lowest point होची draw point. तो जदि हमें फोल्ड एमती करछंती ताले एटा होची कोन hinge point that is also crest point. So sometimes कौन है hinge point और crest point match करते sometimes hinge point और crest point match करते नहीं suppose अगर ये वाला fold plus so you will get maximum hinge curvature here so the crest point will be here. So crest and trough directly लिखते हो crest and trough are the highest and the lowest point respectively in a fold है ना highest and lowest point respectively on a fold surface. So next comes to axial plane. So axial plane also it is an imaginary plane that divides the fold into two similar half. हमें axial plane और axial surface word use करते हैं तो हम axial surface और axial plane दीटा term use करा जाए. So axial surface और axial plane हमें कोई पता it is the imaginary plane that divides the fold into two similar halves, not the exactly equal half. So it is divide the fold into two similar halves. So एटा जदि तुमरो गोटे सिंगल लेयर फोल्ड अछि त तुमे कहले कि this is a plane that divides the fold into two equal halves. जदि हम एमती करछंती त इमेजिनरी प्लेन हम पास करेबे राइट जरा ताको फोल्ड को कोन तीटा भी तुमरो सिमिलर हाफ रे डिवाइड कर यदि मल्टीपल लेयर फोल्ड थाए ताले इन दैट केस यू विल एनकाउंटर टू वर्ड एक्सियल सरफेस एक्सियल प्लेन कहना मल्टीपल लेयर फोल्ड रे सब लेयर फोल्ड उरा इक्वल बाय इक्वल यू कैन से लाइन रे माने डिवाइड होंती नहीं सपोज कि इठी तरह फोल्ड अछि मल्टीपल लेयर अछि गोटे लेयर मल्टीपल लेयर अछि तो ईच लेयर्स आर सेम सब लेयर रो सेम कैरेक्टरिस्टिक वाइट हमें गोटे थिंग रे कहया गले इट इज कंसेंट्रिक फोल्ड कंसेंट्रिक माने कोन गोटे लेयर तमे जेमती ड्रा कलो नेक्स्ट लेयर ता पछरे सेमती तापर लेयर सेम सेतपे समस्त मिड पॉइंट कोन गोटे लाइन ने आसीबो तो तमे एक्सियल प्लेन गोटे डिफाइन करते एक्सियल प्लेन डिफाइन कर बट यदि तुम्हें इरेगुलर फोल्ड होता अच्छी तरह सपोज तुम्हें मल्टी लेयर फोल्ड अच्छी इरेगुलर फोल्ड अच्छी तो मतलब गोटे एक्सियल
प्लेन था अगर डिफाइन करिया चाहिए तो इट विल बी कर्व वन सेटा कोन हो कर्व हो कहना सब लेयर रे तुमको मिड पॉइंट को टच करके जीवार अछि तो सेति सेटा कोन है कर्व है जदि तुम एक्सियल प्लेन टा कर्व हो गला त ताको एक्सियल सरफेस इट इज द कांसेप्ट बिटवीन एक्सियल प्लेन एंड एक्सियल सरफेस बट तुम्हें खाली तुम्हें जो एनकाउंटर करना चाहते हो सब एक्सियल प्लेन वर्ड ही यूज करा तो देखो एक्सियल सरफेस और एक्सियल प्लेन होसी इट इज द imaginary plane that divides the fold into two similar halves. It is an imaginary plane that divides the fold into two similar halves. एरिया में देख पाइबा दिस इज होसी एक्सियल प्लेन बट मैं एक्सियल सरफेस को लाइक एक्सियल प्लेन ही पहले तो एक्सियल प्लेन जेतरे तुमरो कि डिफरेंट लेयर को ट्रैवर्स करके जाउसी सो व्हेन इट intersecting in different layers different layer में intersect करियो तुम यदि क्रॉस सेक्शन देखियो ताले यू विल गेट ए लाइन हियर ये जगह कहां पाइबो लाइन देखि इधर एक्सियल प्लेन तक पुट कलो तो ये जगह तुम कहां पाइबो लाइन पाइबो सो लाइन ता सब फोल्ड रो सब लेयर को टच कर तो सेटा को हम कहते हैं एक्सियल ट्रेस कौन एक्सियल ट्रेस तो गोटे एक्सियल फोल्ड एक्सिस नॉर्मली जाए कि फोल्ड सरफेस को इंटरसेक्ट करियो बोलते दादा एक्सियल प्लेन এটা কোন হলো एक्सियल प्लेन तो एक्सियल प्लेन फोल्ड सरफेस को এই লাইনে इंटरसेक्ट করছে করছে না তো সেটা তুমি কোন করছো হিঞ্জ লাইন भी কই পারিবো and also called as one fold axis भी कहि पारिबो और fold axis so fold axis कोन हो with the line of intersection of axial plane on the fold surface जोटी की एक्सियल प्लेन टा फोल्ड सरफेस को जो लाइन में इंटरसेक्ट करे सेटा फोल्ड एक्सिस एंड दैट इज आल्सो हिंज लाइन फोल्ड एक्सिस इज इक्वल टू हिंज लाइन है ना तो फोल्ड एक्सिस ये कोई पर द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एक्सियल प्लेन एंड फोल्ड सरफेस तो देखो लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एक्सियल प्लेन एंड फोल्ड सरफेस যদি फोल्ड एक्सिस जोटा हिंज लाइन सेटा हमें ताले फोल्ड एक्सिस टॉप काई यूज करछ फोल्ड एक्सिस हमें सब बेले डिफाइन कर परिबा ना जते बेले हिंज लाइन टा स्ट्रेट थिबो सेते बेले हम ताको फोल्ड एक्सिस कहबो तो समटाइम्स कहो हिंज लाइन टा कर्व हो जाय देखो एटा होछ कोन हिंज लाइन द कर्व अछि जोटी हिंज लाइन कर्व थिबो से जगह रे तुमे फोल्ड एक्सिस बोली कहि परिबो ना ओनली स्ट्रेट केस रे ही तुमे फोल्ड एक्सिस कहि परिबो तो सेते पे तुमर फोल्ड एक्सिस ओनली defined in cylindrical fold तो ये जो फोल्ड उरा अछि हमरा जारा हिंज लाइन के सबले स्ट्रेट थाए ताको हम सिलिंड्रिकल फोल्ड कहू जारा हिंज लाइन बेंड आसियो ताको हम कहते नॉन सिलिंड्रिकल फोल्ड फोल्ड एक्सिस ओनली इन केस ऑफ सिलिंड्रिकल फोल्ड रे ही डिफाइन करा जाय नॉन सिलिंड्रिकल फोल्ड रे आसीबो ना तो ये देखो एटा सिलिंड्रिकल फोल्ड है नॉन सिलिंड्रिकल तो ओनली डिफाइन इन केस ऑफ वन सिलिंड्रिकल तो एक्सियल प्लेन न कहि हम कोन कहबा एक्सियल सरफेस कहबा बिकॉज़ इट इज कर्व इट मीट करछि हिंज लाइन हम हां तो हिंज लाइन जे स्ट्रेट अछि त हम फोल्ड एक्सिस भी कहि मेरा देखो उते सिलिंड्रिकल फोल्ड नॉन सिलिंड्रिकल फोल्ड तो सिलिंड्रिकल फोल्ड रे तुम फोल्ड एक्सिस कहि परियो नॉन सिलिंड्रिकल रे वी विल से हिंज लाइन सिलिंड्रिकल रे तुम बोथ कहि परियो कोन फोल्ड एक्सिस एंड हिंज लाइन then comes to some other term that a series of fold है तो फोल्ड रो ये जो इन्फ्लेक्शन पॉइंट फोल्ड रो इन्फ्लेक्शन पॉइंट पाकरे तुम टेंजेंट ड्रॉ करिवो दीटा है ना टेंजेंट drawn at the inflection point they will make an angle that is usually interlimb angle ta kong interlimb angle so
So it is the angle between two tangents drawn at the inflection points. It is the angle between two tangents drawn at the inflection points. When it comes to this is your median surface, the median line तमें कह परियो. तो the median surface और median line. यदि 3D वाला फोल्ड बता रहे हैं कौन median surface हो 2D ले था यदि cross section वाला फोल्ड ले ताले नाम कौन median line. Median line which is line joining inflection points in a series of fold. ଗୋଟେ series of fold रे जो line था कौन inflection point को join करे ताको कौन median line. Line joining inflection points in a series of fold. दीटा consecutive inflection point ଭିତରେ ଯେତିକି distance हो दीटा consecutive inflection point ଭିତରେ ଯେତିକି distance हो ଏଇ दीटा consecutive ଆଙ୍କ ଭିତରେ ଯେତିକି distance हो ତାକୁ ଆମେ କହନ୍ତି width of the fold ତା କଣ width of the fold. The fold ର width କଣ it is the distance between two consecutive inflection points. From median surface or median line to the hinge, median to hinge मान जेती हो जाता है amplitude of the fold. Come on, amplitude of the fold. The distance between median line and hinge of the fold. Then comes to for wavelength. Wavelength which is the distance between two consecutive crest or two consecutive drop. तो हमारे एक ही दीटा consecutive crest भितरे बा दीटा consecutive drop भितरे जैसे distance है सेटा wavelength. And the distance between the crest and draw of the fold. Crest और draw भितर यदि distance रहेगा सेटा कौन सी height of the fold. The height of the fold and amplitude of fold are different. Amplitude measures from the median surface और height which is from crest of the fold to the draw of the fold. So that is height of the fold. देखा है So there is a different terminology when it comes to classification of the fold. So fold is classified on two bases. Dira basis से classify कराई है. उटा हम कौन थी geometry classification. और हम कौन थी genetic classification. So geometry classification which tomorrow basically deals with the geometry of the fold, the shape of the fold, है ना? The geometric aspect of the fold. A genetic classification is on the basis of the origin. केमिति fold formation है ता पर नहीं classify करा. And genetic classification is also the cause of folding. tomorrow data में लिखा है genetic classification and cause of folding both are same, है ना? तो first हमें देखिए geometric classification. There are numerous ways जो कि तुम्हारा फोल्ड गुरा को क्लासिफाई कराई थी डिफरेंट कैटेगरी रे. तुम्हें को वन बाय वन देखिबा. geometry classification. आज देखिए on the basis of closing
and facing direction. So on the basis of closing and facing direction, fold are divided into three types. तीनटा टाइप में डिवाइड कर परिबो. एटा गोटे फोल्ड हो. This is one type of fold. This is another type of fold. So first one the antiform, second one the synform, third one the neutral. So the antiform fold, synform fold, neutral fold. So what is the difference between these three fold? So the antiform देखिबा, so it closes upward. So upward को कौन होची? Close होची. But synform कौन होची? It closes downward. तळाडू close होची. Neutral, it closes sideways. तब कहले closing and facing direction. भाई यदि देखिबा हमें एटा डाउनवर्डली ओपन, एटा अपवर्डली ओपन, एटा साइडवाइज ओपन. करेक्ट. So first लेखो antiform. So in antiform, fold closes upward. तो closes upward कोई परिबा, है ना? Otherwise you can also say convex upward. कौन कोई परिबा? Convex upward. Upwardly एटा convex भी होगा. So closes upward, convex upward, है ना? ता जो limb बचती, the limbs they will dip away from each other. The limb will dip away from each other. Limbs will dip away from each other. Similarly, you can write down synform where the limb will dip towards each other. So it upwardly open routes, but downwardly closed routes, but downwardly convex routes. So when neutral fold which is the closest sideways, simple, practically. Well, synform, antiform. Then the neutral action. Then on the basis of stratigraphic relation, on the basis of stratigraphic relation, or on the basis of you can say age relation, on the basis of stratigraphic relation. So stratigraphic rule is that comes the law of order of superposition. Law of order of superposition. जहाँ कहे कि गोटे अनडिस्टर्ब स्ट्राटा तार सब बड़े टॉप पार्टा कौन था यंगर था बॉटम पार्टा ओल्डर था कारण डिपोजिशन है आगे तल पार्टा हम तापर एमती ऊपर जीव तो ऑब्वियसली लोअर पार्टा कौन हम ओल्डर हम अपर पार्टा यंगर हम तो दिस इज होची यंगर दिस इज ओल्डर तो हमें दीटा वे रे को बेंड करि परिबा एमिति बेंड करि परिबा हला नले एमिति बेंड करि परिबा ठीक है सपोज 1 2 3 1 2 3 तो इटा हम कौन एंटीफॉर्म है एंटीफॉर्म है कि तो जोटी तुम देखिबा सेंटर आडको बा कोर आडको हम कहते कौन कहते फोल्डर कोर आडको ओल्डर थो जदी एबा बेंड हुए तार ओल्ड पार्टा कोट रहबा कोर रे रहबा यंगर पार्टा कोट रहबा पेरिफेरी रहबा ताटा कहते एंटी क्लाइन कौन कहते एंटी क्लाइन तो एंटी क्लाइन इंडिकेट करे कि कोर पार्ट रे ओल्डर रहबा पेरिफेरी पार्ट रे यंगर रहबा सेमती सिनफॉर्म रे सिनक्लाइन रे कोन हो सिनक्लाइन रे कोन हो एटी कोन रहबा यंगर एटा रहबा ओल्डर सो कोर रे रहबा यंगर पेरिफेरी रहबा ओल्डर है
Anticline में younger rock at the periphery, older rock at the core. Syncline में younger rock at the core, older rock at the periphery. तार just उल्टा the synformal anticline, antiformal syncline. So synformal anticline माने कौन? Synform माने कौन? ये ही तो এটা कौन? Synformal anticline. तो मतलब फॉर्म का synform है तो पर stratigraphic is the relation से antiform रे देखो. तो antiform रे हमें core रे कौन पाते? Older पाते. Periphery रे younger पाते. যদি older rock periphery core रे पाएगी younger rock periphery पाउछ and the same is synform ताना आइगो synformal anticline. Similarly যদি मोर antiform same अछि but मो core रे younger पाउछि periphery रे older पाउछि so it is a relation of a syncline. तो मोर shape कि कोन अछि antiform अछि तो हेइ जो ताना कोन antiformal syncline. এটা को केस हबा तुम सिंपल लेंस देखौ छी तो बेले बेले कौन हुए मोर धर बेड डिपोजिट है सेमती गोटे जगह रे देयर इज ए चांस कि माने कौन होते ओवरटर्न हो जाते तो एटा रहला तुमर 1 2 3 ओल्ड सॉरी यंगर ओल्डर ड्यू टू सम टेक्टोनिक इवेंट दे कैन ओवरटर्न लाइक दिस कि से माने ओवरटर्न हो जाते तो एटा एमती हो बेरन तो अब आपको जदी तुम एंटीफॉर्म करेबो ताले कोन सिंप्लाइन हिज यंगर रा कोर रे पळेछ याको जदी हमें कोन सिंफॉर्म करेबा ताले ओल्डर रा कोर रे पळेछ तो एंटीक्लाइन कैरेक्टरिस्टिक बुझलन सो एंटीक्लाइन जोटी तमे यंगर रा पाइबो कोर रे सेटा हे गला सिंप्लाइन एंटीक्लाइन होजी जोटी तुमरो ओल्डर रा कोर रे पाइबो तो सेही केस है यदि शेप को तुम ऐड करो ताले यदि सिंफॉर्म से थियो ताले सिंफॉर्मल एंटीक्लाइन की एंटीफॉर्मल सिंक्लाइन ये टर्म यूज कराए तो देखो जान करियो दसे कथा कहला तुमरो एठी ए जो बेटा अछि कोन एटा बेंड हे जे उल्टी जाई छी तो टॉप रे थला एठी कम होछि बॉटम को पड़े तो सेठी एतले बेंड होछि से माने तो ऑब्वियसली स्ट्रैटिग्राफिक रिलेशंस रा कोन होछि उल्टा ही होछि चेंज हो जाउछि तो सेट पे सिंफॉर्मल एंटीक्लाइन एंटीफॉर्मल सिंक्लाइन so लिखिबो सिंफॉर्मल एंटीक्लाइन ने द फॉर्म ऑफ द शेप इज सिंक्लाइन the shape is synform but it shows the stratigraphic relation of a anticline ta mane tumara anticline na hochi kono older rock at the core पर लिखो डायग्राम